दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीओपीओ अटेनमेंट मीन्स बेसिकली ये वर्कशॉप है कि आप कैसे सीओपीओ अटेनमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वर्कशॉप में बेसिकली दो पार्ट हैं। सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको हैंड ऑन दिखाऊंगा कि कैसे आप सीओपीओ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेशन के लिए देख रही है, तो डेफिनेटली आईक्यूसी डिपार्टमेंट में काम होता है कि भाई वो हर सब्जेक्ट के सीओपीओ अटेनमेंट को कैलकुलेट करें और एनालिसिस करें कि क्या वो सीओपीओ जो भी डिसाइडेड है उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि सीओ क्या होता है, पीओ क्या होता है, पीएसओ क्या होता है, उसके मीनिंग क्या है, उसके यूज क्या है, कैसे हम गैप एनालिसिस कर सकते हैं एंड कैसे फाइनली हम किसी भी कोर्स का सीओ कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये किसी भी प्रोग्राम का पीओ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट में किसी भी प्रोग्राम के आउटकम को हम अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम आउटकम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आउटकम हमारा सीओ पीओ पीएसओ से डिसाइड होता है। तो बेसिकली इस वर्कशॉप में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड सीओ पीओ पीएसओ, मैपिंग कैसे होती है, हाउ यू कैन मैप सीओ पीओ एंड पीएसओ, देन we will discuss how to calculate CO attainment, PO attainment. Okay, so basically nowadays जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है nowadays it is outdated. ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में होता क्या है, बेसिकली दैट एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स rather than learning actual skill or gaining any practical knowledge. इससे क्या होता है कि अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, तो बेसिकली ड्यू टू ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज गेटिंग वर्स. To avoid this problem, school and colleges need to switch to an outcome-based education system. Outcome-based education system basically a new education system that focuses on the actual outcome of the course and not just the grade. तो बेसिकली आजकल का जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो चुका है. नाउ आवर एजुकेशन सिस्टम इज फोकसिंग आउटकम नॉट आउटपुट. आउटपुट मीन्स कोई भी प्रोग्राम करने के बाद स्टूडेंट ने क्या सीखा, दैट इज आउटपुट. मीन्स आप बीटेक करो, आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया, दैट इज आउटकम आउटपुट. बट बीटेक करने के बाद इफ यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर एंड यू आर अर्निंग सम मनी, मीन्स दैट इज आउटकम. क्योंकि फाइनली हम कोई भी कोर्स स्टडी इसीलिए करते हैं कि उसका कुछ एक आउटकम हो. आउटकम मीन्स उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद या उस प्रोग्राम करने के बाद आप कुछ कर रहे हैं, दैट इज आउटकम. So, outcome based education is an educational theory that focuses on what students should know and be able to do when they leave the institute or university. It's also known as a performance based education system. जब भी हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली इन टर्म ऑफ हायर एजुकेशनल प्रोग्राम, आउटकम बेस्ड एजुकेशन are defined at three levels as program outcome, program specific outcome and course outcome. Course means एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आउटकम, प्रोग्राम मीन्स उस पूरे प्रोग्राम का आउटकम एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक आउट मीन्स पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का आउटपुट. कहने का मतलब है बीटेक आपका एक प्रोग्राम है, बट बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन सिविल इंजीनियर, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर, these are program specific. Program is BTech. Program specific means mechanical, civil, computer science, aeronautical engineering, AI, machine learning. These are program specific. And course means suppose someone is studying mathematics, so that is course. So here outcome based education defined three level if you are talking about higher education system or higher educational institute. Now both output based education system and outcome based education system focus on assessing student learning
but they differ in the approaches, focus, and implementation. Output means is tell about qualification, degree, quantity of knowledge, what you get. That is output. But outcome means आपने क्या सीखा. What is quality of knowledge? Here we are not talking about quantity of knowledge. Here we are talking about quality of knowledge. कोई भी कोर्स करने के बाद उसको आप कितना यूज कर रहे हो, दैट इज आउटकम. ऐसा नहीं कि मैंने बीटेक कर लिया और घर पे बैठा हूँ, दैट इज आउटपुट, क्योंकि आपका मेन मकसद था टू कंप्लीट योर बीटेक प्रोग्राम. But after completing BTech, you are doing job, means that is outcome of that particular program. Now here you can see the difference between output based education and outcome based education. So basically जो output based education होता है, focus on measurable outputs like test, score, attendance and graduation. And outcome based education focus on what students are able to do after completing course of a program. And output is focus on quantity. In outcome is focus on the quality education. And if you're talking about how to measure the performance of a student, to in case of output based education, student performance based on number and statics. And in outcome is totally depend upon student learning based on the demonstrated competency and scope. And when talking about teacher centered teaching approaches, so here in output the teacher is going in classroom delivering the lecture, but in case of outcome this is student centered learning process. So there are many things. Okay, so here in this slide you can see the difference between output based education and an outcome based education. Now what are program outcome? Okay, so here now you are talking about a specific program, as like BA is a program, BTech is a program, and if talking about BSc is also a program, MBA is a program. So program outcome are a statement that describe what students are expected to know and be able to do by the time they graduate. तो ये बताता है कि कोई भी बच्चा क्या उम्मीद करता है उस प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद, और जैसे ही वो प्रोग्राम को कंप्लीट करता है तो वो क्या कर सकता है. बेसिकली दिस इज प्रोग्राम आउटकम. एंड अगर हम बात करते हैं कि किसी भी एक अच्छे प्रोग्राम आउटकम की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, सो ए गुड प्रोग्राम आउटकम शुड बी मेजरेबल. यस, वी कैन measure. That should be student centered. That should be broad, aligned with the program goal, and written using action verb from the Bloom taxonomy. अगर आपको Bloom taxonomy के बारे में स्टडी करना है तो मैंने 3-4 वीडियो इस पे बना रखे हैं, तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि Bloom taxonomy बेसिकली होता क्या है. यहाँ पे हमने जो पहले पॉइंट की बात की थी, दैट शुड बी मेजरेबल. सो नॉन मेजरेबल क्या होता है, मेजरेबल क्या होता है, हम इससे देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं. नॉन मेजरेबल मींस स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग एथिक्स. देयर इज नो लॉजिक टू व्हाट वी आर टॉकिंग. अगर स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग एथिक्स सीखा तो वेयर इज ही या शी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट. ओके, नाउ अगर हम मेजरेबल पीओ की बात करेंगे तो स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज एंड अप्लाई ethical principle in professional engineering situation. Means here we are talking कि yes, इसके बाद स्टूडेंट इस ethical principle को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है. बट पहले सेंटेंस में जब यहाँ की हम बात करते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बच्चा सीखेगा. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बच्चा हमारा सीखेगा, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उसको अप्लाई करेगा. सीखना जरूरी नहीं है, अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि अप्लाई करना इज आउटकम.
ओके, ना वो बात करते हैं कि भाई हम कोई भी प्रोग्राम आउटकम कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। किसी को समझ में नहीं आता है कि प्रोग्राम आउटकम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्री डिफाइन है। हाँ, कुछ प्रोग्राम के लिए जैसे फार्मेसी के लिए प्रोग्राम आउटकम डिफाइन है, इंजीनियरिंग के लिए प्रोग्राम आउटकम ऑलरेडी डिफाइन है थ्रू दी एनबीए एंड सम अदर सोर्स है। बट अगर आप खुद से अपना प्रोग्राम आउटकम लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और प्रोग्राम आउटकम सिर्फ एक बंदा नहीं लिख सकता है। उसके लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, उसमें एचओ या जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए, सबसे डिस्कशन होना चाहिए, देन वी कैन राइट ए प्रोग्राम आउटकम। क्योंकि सबसे पहले हमें उस प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि वो प्रोग्राम करता क्या, उस प्रोग्राम में हम क्या चीजें कवर कर सकते हैं, उस प्रोग्राम के बाद स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, देन यू कैन राइट ए प्रोग्राम आउटकम। ऐसा नहीं है कि आपने बैठा और लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रोग्राम आउटकम में कुछ 3-4 पॉइंट कॉमन होते हैं जो हर प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हुआ, एथिकल प्रिंसिपल हुआ, कुछ चीजें हैं जो आगे हम बात करेंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम आउटकम लिखने जा रहे हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। What kind of graduate does the program aim to produce? What professional academics competencies are expected at the graduation? So first step क्या है? Refer to accreditation guidelines. So you know, just use standard outcome as a base. For example, NBA has 12 predefined POs for engineering, जो कि मैंने बोला कि एनबीए ने ऑलरेडी इंजीनियरिंग के लिए 12 पीओ डिफाइन कर रखे हैं। उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम है आपका, चाहे बीटेक हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, यू कैन टेक रेफरेंसेस फ्रॉम दैट 12 predefined POs to write your POs. Okay, use Bloom taxonomy. Second step, this is very good step, and you have to adopt when you are writing program outcome. Just start your program outcome from the apply, analyze, design, evaluate. Okay, and you should avoid verbs like know, understand, or learn. No, this is not good because they are very hard to measure. But when you are discussing about analyze, apply, this is easy to measure. Now, third, ensure smart criteria. Smart means S means specific. Whatever you are writing program outcome, that should be specific. Second, that should be measurable. क्योंकि हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि क्या होता है नॉन मेजरेबल और क्या होता है मेजरेबल। अचीवेबल, whatever you are writing program outcome, that should be achieved. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम आउटकम लिख दिया है कि जो कभी अचीव हो ही नहीं सकता। तो वी हैव टू अवॉइड दिस। रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आप बीटेक का प्रोग्राम आउटकम लिख रहे हैं तो दैट शुड बी रिलेवेंट टू बीटेक प्रोग्राम या टेक्निकल। अगर आप बीए का प्रोग्राम लिख रहे हो तो दैट शुड बी रिलेवेंट टू बीए। आप अपने बीए में लिख दिया कि नहीं स्टूडेंट अप्लाई द कोडिंग इन सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो दैट इज नॉट रेलिवेंट। क्योंकि जैसे हम कोडिंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, इस बीए में आपने लिखा हाँ अप्लाई सोशल नॉलेज इन सोसाइटी, दैट इज ओके because this is a part of BA. Okay, and this type of PO can be introduced in engineering program also. Time bound, that should be time bound कि हाँ एक विद इन टाइम बाउंड में उस चीजों को हम अचीव कर सकें। नाउ लास्ट स्टेप इज फोकस ऑन की डोमेन। उसका की डोमेन है क्या? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं graduate will demonstrate ethical principle and commit to professional ethics and responsibility in engineering practice. So basically, we have to focus on the outcome, not objective. Right, what a student will be able to do upon graduation, not what the teacher will teach. So this is first example is also example of PA. Here you see will demonstrate. Okay, and here apply engineering knowledge to identify formula and solve complex engineering program. Apply is a part of Bloom taxonomy. Okay,
सो जो हमने बात की थी सेकेंड स्टेप की, उसमें ये था कि ट्राई टू यूज start your program outcome from the blue taxonomy. That is standard procedure. And here you can see teach student about engineering principle. No, this is wrong. This cannot be program outcome. Here we are talking in terms of teacher, what teacher is going to teach. But program outcome is what is student going to learn after the completion of program. How student is going to utilize that knowledge in the society. So apply engineering knowledge to identify, formulate and solve complex engineering problem. This is standard PO. Now here you can see there are two examples. Student will learn software skill. Here in first statement we are talking student सीखे. But here apply modern software tool for engineering process. यहाँ पे हम application की बात कर रहे हैं. Student is going to apply. और यहाँ पे there is no any Bloom taxonomy. Here you can see the Bloom taxonomy. So start your program outcome with the Bloom taxonomy. Now here is you can see the second one is action oriented and measurable. In first one we cannot measure कि how much student has learned. अगर वो बच्चा सोसाइटी में या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, मीन्स दैट इज वेस्ट. Now, just overall, each PO should begin with an action word from Bloom taxonomy as like apply, analyze, be clear, measurable and student centered, reflect knowledge, skill, attitude or value, align with graduate attributes or professional competencies. Now, here you can see basically these four PO can be included in any PO. Communication, this is required for every program outcome. Whether you are studying BA, BSc, BTech, MBA, communication is required. So communicate effectively on a complex topic with the peers and society at large using modern tools and technique. This can be included in any POH. Ethics required for any program. Apply ethical principle and commit to professional ethics and responsibilities practice. This can be included. Here you can see PO started from apply. This is Bloom taxonomy. Problem solving, analyze and solve real world problems using appropriate theories, methodology and tools. Analyze is also Bloom taxonomy. Teamwork, function effectively as individual and as a member of leader in a diverse team. तो इन चारों में से आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन, इथिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप किसी भी प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड है हर प्रोग्राम के लिए, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएमएलटी हो, कोई भी प्रोग्राम है, यू कैन इंक्लूड these four PO everything. Okay, now how you can write, tips for effective PO की बात कर रहे हैं. हमने पहले ही बात कर ली कि कौन लिखता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है. आप अपने से खुद PO अपना लिख सकते हैं by keeping some main idea from the NBA accreditation because they have defined 12 PO from the for engineering. तो वहां से आप 3-4 ले सकते हैं. Involve all stakeholder, faculty, industry, alumni. Map each PO to course outcome. Review periodically based on the industry and academic changes. Keep each PO to one main idea and just try to aim for 8 to 12 PO for a full program, not more than 12. And yes, this can be less also from 8, but just try to keep within 8 to 12. 8 to 12 is a standard. Maximum should be 12. Try to keep minimum 8. जिसमें 4 तो कॉमन ही होता है. Okay, so here up you can see the PO engineering program outcome for engineering program. NBA provides 12 standard PO for engineering programs. So engineering knowledge, program analysis. Now here you can see PO7, PO8, PO9, PO10. These four, here you can see 7, 8, 9, 10.
12, these can be included in any PO because these are common for every program. Some PO can be different. Now here you can see the program outcome for pharmacy program. Let's see here you can see fifth one, leadership skill, communication, environment, sustainability, lifelong. Four, these are four common from engineering also. क्योंकि यही चार पीओ हमने इंजीनियरिंग में भी देखा है, यही हम यहाँ भी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 4 या 5 पीओ हमारे ऐसे होते हैं कि जो हर प्रोग्राम में इंक्लूड किए जा सकते हैं। मीन्स आपको सिर्फ 4 या 5 पीओ और लिखने होते हैं। यहाँ पे 11 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 है। यहाँ पे देखिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, इथिक्स, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग की बात कर रहे हैं, लीडरशिप स्किल की बात कर रहे हैं। तो ये जो 4 या 5 पीओ होते हैं वो बेसिकली हर प्रोग्राम में कॉमन होते हैं। अब बात करते हैं कि भाई प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। प्रोग्राम स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अभी तक हम एक ओवरऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात कर रहे थे, हम ओवरऑल बीए की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे एक हम प्रोग्राम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैकेनिकल की बात करने जा रहे हैं। हम लिखते हैं बीए इन हिस्ट्री, तो यहाँ पे हम एक हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो जो हिस्ट्री है दैट इज स्पेसिफिक, दैट इज प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। मीन्स बच्चा जब हिस्ट्री पढ़ेगा तो वो क्या सीखेगा, बच्चा जब मैकेनिकल पढ़ेगा तो क्या सीखेगा। भाई जो मैकेनिकल पढ़ेगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें को सीखेगा, जो हिस्ट्री पढ़ेगा वो हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा चीजें सीखेगा। तो बेसिकली जहां भी हम हिस्ट्री और मैकेनिकल की बात करते हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। So PSO or program specific outcomes are statement that describe what a student of a specific academic program should be able to do after graduation, typically within a couple of years. Unlike general program outcomes that apply across the all program, PSO are unique to your department or discipline. Basically जो पीओ होते हैं तो कॉमन होते हैं, जैसे एक अपने पीओ लिखा इंजीनियरिंग का, वो मैकेनिकल के लिए भी कॉमन है, सिविल के लिए भी कॉमन है, सीएस के लिए कॉमन है। लेकिन जो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम होता है वो सिर्फ आपके एक डिसिप्लिन के लिए अप्लाई होता है। अगर हमने कंप्यूटर साइंस का पीएसओ लिखा है तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड होगा, अगर मैकेनिकल लिखा तो मैकेनिकल लिखा। अब बात करते हैं कि भाई पीएसओ क्यों इंपॉर्टेंट है। दे शोकेस द कोर स्ट्रेंथ ऑफ योर प्रोग्राम, दे हेल्प इन करिकुलम अलाइनमेंट एंड असेसमेंट, एंड दे आर क्रूशियल फॉर accreditation बॉडी लाइक NAAC, NBA, ABET. So, firstly, how to write PSO. So, know your program's core. Basically, we have to see the curriculum. What is core of that particular subject? What is key subject area? For example, computer science program might focus on AI, machine learning, and software engineering. Okay. Second step is just align with your vision and vision. Your PSO should be reflect the mission and vision of your department and institute. Use measurable action verbs like apply, analyze, design, and these make your outcome clear and measurable. And be specific and realistic. Avoid vague language. Focus on what your student can realistically achieve within 1 or 2 years of graduation. So here you can see generally for computer science, here you can see 2 PSO. Graduate will be able to apply software development practices. Graduate will demonstrate expertise in data analytics. For mechanical engineering, here you can see because these are example. You can write your work. Okay. For mechanical engineering, you can see graduate will apply knowledge of thermodynamics because thermodynamics is a part of mechanical engineering, not part of computer science. Also here you can see CAD CAM. So these are part of mechanical, not part of civil or computer science. Now here is some quick tips about PSO. Keep it 2 to 3 PSO only, not more than 3, and standard is 2. Okay, minimum 2, maximum 3, not more than 3. Use clear, simple language. Make sure they are measurable and accessible. Get feedback from your department before finalizing. Now, what is course outcome? अभी तक हमने PO पर देखा, PSO देखा. This is कोर्स आउटकम। व्हाट इज कोर्स आउटकम? मैं सब यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करने जा रहा हूँ।
अभी तक हमने प्रोग्राम की बात की, प्रोग्राम स्पेसिफिक की बात करी, अब हम उस प्रोग्राम स्पेसिफिक के अंदर जो कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं हम उसकी बात करने जा रहे हैं कि भाई आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स स्टूडेंट क्या लर्न करेगा, क्या सीखेगा। सो कोर्स आउटकम डिस्क्राइब what learner will be able to do after completing your course. They are specific statement that focus on learner achievement, not just what you teach. तो जब भी कोई कोर्स कोई भी फैकल्टी पढ़ाता है तो इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे ने आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्स क्या सीखा। आपने क्या पढ़ाया, इट डजेंट मैटर, बच्चे ने क्या सीखा, इट्स मैटर। ओके, सो there are two things: course objective versus course outcome. Objective means what the course aim to teach or cover, means जैसे जब भी कोई कोर्स स्टार्ट होता है तो सबसे पहले टीचिंग प्लान बनाया जाता है, उस टीचिंग प्लान में ऑब्जेक्टिव को मेंशन किया जाता है, नॉट आउटकम। ऑब्जेक्टिव मीन्स हाउ टीचर इज गोइंग टू टीच, हाउ what teacher is going to cover during the all the lecture. Okay, outcome means what the student will actually learn and demonstrate after completing the course. So course objective means a broad statement about what the course intend to teach or cover. Course outcome means specific statement about what learners will be able to do after the course. Focus teacher centered. Course outcome is basically student centered. Scope general goal or intention. Here concrete, measurable and achievement. So if you're talking about purpose, so basically guides the content and teaching approach. Here, guide assessment and evaluation of learning. Okay, so these are difference between course objective and course outcome. Now, how you can write course outcome. तो बेसिकली कोर्स आउटकम जब भी आप लिखने जा रहे हैं तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कमेटी बैठाई जाए, चाहे एचओडी को शामिल किया जाए, इसमें एक दो सीनियर प्रोफेसर मिलकर कोर्स आउटकम लिख सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया है, आपको ज़्यादा नॉलेज है। जो कंसर्न टीचर है वो बता सकता है कि हाँ इस कोर्स का आउटकम क्या हो सकता है। इफ आई एम टीचिंग केमिस्ट्री, मैं नहीं बता सकता कि फिजिक्स का कोर्स आउटकम क्या होगा। बच्चा जब फिजिक्स पढ़ेगा तो क्या क्या सीखेगा, आई कैन नॉट टेल यू, बट द टीचर हु इज टीचिंग द फिजिक्स, ही or she can tell you. So whenever you are writing course outcome, you should have some expertise in that particular course. If you have not, then you cannot write the course outcome, because this is very much important to write course outcome. Anyhow, after completion of that course outcome, your attainment will be measured. उस अटेनमेंट के बाद पता चलेगा कि बच्चे ने उस कोर्स आउटकम को अटेंड किया है या नहीं किया। So this is very much important कि who is going to write your course outcome. So writing course outcome involves clearly stating what learners will be able to know, do or demonstrate after completing a course. The outcomes should be specific, measurable, achievement, relevant and time bound. Again, start with action words like analyze, apply, evaluate, create. Specify the content और skill, उस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद बच्चा क्या सीखेगा। Clearly state the knowledge, skill and tools that the student will gain. What is exactly will the student be able to do. Include some condition, under what condition or context will the learner perform the task, like using Excel in a group setting. Okay, mention criteria for performance, how well should the learner perform. Okay, and just try to keep it student centered, focus on what the student will do, not what the instructor will teach. Okay, so we have to focus on student knowledge. Okay, student outcome. And
Here you can see the example. By the end of this course, student will able to perform this using this. Suppose you can write कि by the end of this course, student will do some analytical calculation using Excel. Okay, so this type of course outcome should be written. Here you can see the example of course outcome. A student will learn about marketing. Okay, now see the second statement. A student will be able to create a marketing plan based on the customer data. पहले में स्टूडेंट सिर्फ लर्न कर रहा है बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता बट इन सेकेंड केस यू कैन सी student will be able means here we are talking about what student has learned. So the second one tells us exactly what student will do. So this is example of course outcome. Okay, so uh, just see the sample course outcome. By the end of this course, student will be able to analyze financial statement to evaluate a company performance. The student will be able to demonstrate proficiency using Python for a data analysis. Upon completion, learner will create a marketing strategy. The student will be able to explain the principle of human anatomy. So basically, these are sample course outcome. So what do you have to remember when you are going to write course outcome? Keep outcome student centered. Focus on what learner will do, not what you will teach. Make them measurable. If you cannot measure, it's hard to assess. Keep them clear and concise. And how many COs should you have? So typically 3 to 6 well-defined outcome are ideal for most courses. Not less than 3, not more than 6. Why? This range keeps outcome focused and manageable for both instruction and students. And for short courses or workshop, there should be 2 or 4. For longer and more complex courses, you can have to 6 to 8 outcome, but not try to go beyond. Okay, so standard is 3 to 6. Now, talking about mapping, because we have studied program outcome, PSO, and course outcome. Now, how these three is going to relate each other. This is very important aspects. So, CO-PO-PSO mapping is a key part of outcome-based education used in NAAC NBA accreditation framework. COPO-PSO mapping is an initial part of outcome-based education. It ensures that the course outcome align with program outcome and program specific outcome, helping track and measure the attainment of the learning goal. So, firstly, what is step for COPO-PSO mapping? So, step one, define COs, PO and PSO. सबसे पहले आपको CO, PO and PSO define करना पड़ेगा किसी भी एक particular course के लिए. Okay, course outcome means what a student should be able to do at the end of course, and there should be 3 to 6 course outcome we have already discussed. PO means a broad outcome expected from all student of the program, so typically from 8 to 12. PSO means specific to the program, generally 2 to 3. Now create a mapping matrix. Rows represent course outcome, CO1, CO2, column represent program outcome as like PO1, PO2, PSO1, PSO2. So here you can see and use a rating scale to map CO2, PO, PSO, and 3 means strongly relate CO with PO and PSO. Second is moderate, that is moderate level relation between CO and PO and PSO. One means slightly low, means there is a somehow relation between somehow correlation between CO and PO and PSO, and 0 means there is no any relation between CO and PSO. Step 4,
map CO to PSO and PSO. For each CO, decide how much it contributes to each PO and PSO, or fill in the matrix using the scale above. So here you can see uh, these are CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6. Uh, Whatever CO is in that particular course, you have to write. Basically, this is our column. Now this is row and this is column. In column you can see PO1, PO2, PO3, PO4 and so on, and then PSO1, PSO2. Okay, so here you can see now CO1 how related to PO1. 3 means that is highly correlated to each other. That's why we have mentioned 3. Okay, and how much CO1 related to PO2, that is moderate. Then we have mentioned 2, and so on. We have to see ki how CO1 related to PO1, PO2, PO3, PSO1, PSO2, again CO2, PO1, CO2, PO2, CO2, PO. Again, we have to compare all the COs with all the PO and PSO. On the basis of that, we can create a matrix. And this is a matrix which is going to tell ki how CO-PO-PSO correlated to each other. Then we can calculate, you know, attainment. Here you can see the average. Just we have taken the average of this is CO average. जब हम प्रोग्राम आउटकम अटेनमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इस एवरेज की हमें जरूरत पड़ेगी. तो जब भी हम मैट्रिक्स बनाते हैं उसका CO एवरेज भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हम इसकी जरूरत पड़ सकती है. ओके, नाउ स्टेप 5 इज कैलकुलेट CO अटेनमेंट, जो कि आगे हम अगले स्टेप में वही करने जा रहे हैं. एंड कैलकुलेट द PO PSO अटेनमेंट. सो अब अगला जो हमारा पार्ट है, जो मैंने कहा था कि 2 पार्ट है, एक थ्योरेटिकल पार्ट और एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस पार्ट. तो अब हमारा टाइम आ गया है कि हम चीज़ों को देखें कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. तो जब भी हम अटेनमेंट की बात करते हैं, देयर आर 2 थिंग्स. वन इज डायरेक्ट अटेनमेंट, सेकंड इज इनडायरेक्ट. So 80% we take from the direct attainment and 20% from indirect. Direct attainment include all your test stages like midterm exam, assignment, presentation, and semester examination, and done basically based on the student feedback, exit survey, employee feedback. Okay, and then for taking average of both, we calculate final PO and PSO attainment. Okay, तो अब हम चलते हैं अपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस पे.